First day, first darshan. श्रद्धालु हैं, इंतजार कर रहे थे आज ही के दिन का. Ram Mandir doors open for Ram Bhakts. Huge crowds gather for Ramlala's Darshan. Saffron sea of Ram Bhakts engulf Ram Nagri. Ram Rajya begins. Hello and a very warm welcome to an India Today special broadcast on the Shriram Temple at Ayodhya. I'm Gaurav Sawant. The administration in Ayodhya was expecting between 75,000 to about 1 lakh. That is the number of pilgrims they thought would come to the Shriram Temple. They were taken aback, surprised, completely taken by surprise when close to 2.5 lakh pilgrims have already done darshan, and apparently there are close to 1 lakh still waiting for darshan. Massive crowds at the Shriram Temple at Ayodhya as the Grand Temple opened its doors for devotees this morning. This is a huge challenge for the administration. The authorities, not just in Ayodhya, but in neighboring districts, they've requested devotees not to rush to Ayodhya to stagger their visit. They say darshan is now open not just from now, but for all times to come. So they shouldn't rush to Ayodhya. India Today's team of reporters on Ground Zero have sent us this report. An unparalleled sea of humanity. Saffron flags wave proudly. The air filled with the sounds of hymns and chants. The faithful, adorned in saffron stoles, have thronged the holy city. A mesmerizing spectacle in Ayodhya. A day after the consecration of Ramlala in the Grand Ram Temple. महिलाएं कैसी नाचते हुए दिखाई दे रही हैं, जय श्री राम के नारे हैं और ये तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं, यानी कि एक दिन के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने के एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद आप देखिए जय श्री राम के नारे के साथ किस तरह की भावना है यहाँ पर. ये अवधपुरी के लोग हैं जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रकटीकरण इस रूप में कर रहे हैं. Faces beaming with faith and enthusiasm. Spiritual fervour at its peak. पिछले 5 दिन से हम यहाँ पर हैं, ऐसा लग रहा है कि सच में सतयुग में पहुँच गए. अमेरिका से हम स्पेशल आए हैं और भगवान के हमारा बहुत बढ़िया हवन भी हुआ और बहुत बढ़िया दर्शन हुआ. अद्भुत अलौकिक, शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है. तो आज दर्शन करके ही जाएंगे, बिगर दर्शन के नहीं जाएंगे. भीड़ कितनी है? अरे भीड़ की तो कोई गिनती है नहीं. Security is paramount. Checks at the temple gates rigorous. The entire 13-kilometer Rampath witnessing a heavy turnout. Police have strategically placed barricades and ropes along the key routes. कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है. लोगों में बहुत उत्साह है, श्रद्धा की भावना के साथ लोग दर्शन करने आते हैं. सभी लोग धीरे धीरे आने वाले दिनों में दर्शन करने आएंगे और सभी दर्शन कर पाएंगे. किसी को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखना हमारा प्रथम दायित्व है. उसी दायित्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने. जिस होल्डिंग एरिया में पुलिस कहे कि यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार कर लें, अब बैठ जाए और बैठ जाइए. Amidst the security measures, what stands out is the unshakable faith of the devotees. आपको बता दें कि बहुत ज्यादा भीड़, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ गए हैं. स्थानीय प्रशासन की ओर से बार बार यही निवेदन किया जा रहा है कि लोग अभी अयोध्या की तरफ रुख नहीं करें. मैं चाहूंगी संजय जरा आप दिखाइए. आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा करें, उसके बाद आराम से आकर दर्शन कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है. जितनी मंदिर के अंदर भीड़ है उतनी ही मंदिर के बाहर और अलग अलग शहरों में. The focal point of this spiritual journey. Devotees wait for their turn, eager to offer their prayers and witness Ramlala. जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए अब अयोध्या में लगातार आरएएफ से लेकर के यूपी पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं. खास तौर पर मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में चाक चौबंदी बढ़ाई गई है, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. Anticipation hangs thick, like the fragrance of incense,
as devotees move closer for Darshan of Ramlala. With Chitra Tripathi and Abhishek Mishra in Ayodhya, Bureau Report, India Today. So this was a wait not just of 14 years in Treta Yug, but in Kal Yug for 500 long years. And when pilgrims got the opportunity to get a Divya Darshan at the Ram Temple, they rushed into the Garbhagriha. It is a divine temple, but at the Garbhagriha, it was chock-a-block with devotees. Not only did Shraddhalus or devotees want a darshan themselves, in the 21st century, they used technology, their mobile phones, so that their families back home, their friends, their relatives, their loved ones could also get this divine darshan. Many recorded it, this moment, this divine moment, for all times to come. As you can see, this is the entry to the sanctorum, and ahead you can see, of course, the idol of Ramlala, the idol that everyone across the nation was waiting with bated breath to see over the last few weeks. A charged atmosphere prevailed for the first darshan in the sanctum sanctorum as people poured in, bowing, praying, overwhelmed in devotion. स्वर्ग लग रहा है, एकदम स्वर्ग से अच्छा ही लग रहा है। बहुत प्यारा लगा यहाँ, दिल खुश हो गया। यहाँ आने के लिए हम बहुत मेहनत किए, मेहनत प्रयास हुआ हम लोगों का। बहुत ही दिव्य, बहुत ही अलौकिक अनुभूति है। जैसे कि हमारे राम जी का जो फेस है, एकदम मान लीजिए अलौकिक दर्शन हो रहे हैं, दिव्य दर्शन हो रहे हैं। हम इसको अपने शब्दों के माध्यम से बयान नहीं करते, ये खुशी हमारे चेहरे पे झलक रही होगी। राम मंदिर में भगवान राम की पुनर्स्थापना केवल भगवान राम की पुनर्स्थापना नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र में धर्म की स्थापना हुई है, धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप की स्थापना हुई है। इसलिए अब ये धर्म राष्ट्र होने जा रहा है। Everyone wanted to record as much as possible the feelings for the first darshan. This is the moment where India Today brings you this divine darshan of the temple. Several phone cameras, of course, going up right now because everyone's just had the good fortune and blessing to have had darshan of Ramlala. I'll ask my camera person Prem to just lift his camera up so we can see the image of the deity. Phone cameras clamored with TV cameras as jubilant people kept being thankful to Ramlala. नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि यही वो क्षण है जिसका इंतजार सदियों से किया। एक लंबा संघर्ष, उसके बाद एक तस्वीर। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा से आप ये मानिए कि अपना अपितु अपने देश का ही नहीं, पूरे विश्व का उद्धार होने वाला है और बहुत ही जल्द अपना देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। जय जय श्री राम। ओम श्री राम चले पाछे चली सेना, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना, आगे आगे राम चले पाछे चली सेना। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, और कुछ अलग ही अनुभूति है कि 500 साल के बाद ये जो है अयोध्या में, तो वो हमारा सफल पूरा हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ, और दर्शन करके बहुत खुशनुमा और लग रहा है कि हाँ, खुद श्री राम हमारे अयोध्या में और यहाँ पे है। कुछ शब्द नहीं है मेरे पास अभी। मोरे राम आवत घर आए। Paulami Saha and Samarth Srivastav in Ayodhya. Bureau Report, India Today. This outpouring of emotion cannot be faked, cannot be forced. This comes from within. This comes when every generation has been told by the previous generation, one day there will be a Divya Bhavya Ram temple at the Shriram Nagri, at the Janbhumi in Ayodhya. And this is generation after generation believing in the Shriram Mandir at Ayodhya. And every detail of the temple,
of the temple planning, even down to the last detail of what Ramlala will wear, what Ramlala will eat, जो भोग लगाया जा रहा है. Every vrat, every anushtan, every bhog has been carefully designed to cater to a 5-year-old child. What will a 5-year-old child like to eat? Point 1. Point 2, the clothes. Extensive research went into what Ramlala would have worn as son of Raja Dashrath, the king of Ayodhya. We bring you much more in this report. The grandeur of the sacred. Ramlala bathed in a golden aura. Standing majestically in his grand abode. The ornaments adorning Ramlala takes us on a journey into the sacred texts. Their scripturally appropriate splendor drawn from extensive research of the Adhyatma Ramayana. Valmiki Ramayana, Ramcharitramanas and Alavandar Sotra. Guided by the poetic vision of Ayodhya's own Yatindra Mishra. Artisans of Lucknow's Har Sahaimal Shyamlal jewellers delicately crafted the divine ornaments, each one of them etched in the language of symbolism and sacred geometry. अभी तक जो जेवर बनता था वो राम जी का ही बनता था, वो बड़े राजा का बनता था. 5.5 साल के बालक के लिए जेवर बनाना एक अपने आप में एक बहुत पहली बार हमें एक ऐसी जिम्मेदारी मिली. तो इसमें मैंने काफी रिसर्च करी. ये भी ध्यान में रखना था कि भगवान जो हैं वो राजघराने के हैं, राज परिवार के हैं. उनका जेवर भी उन्हें जस्टिफाई करना चाहिए, उनका जेवर भी उतना ही भव्य होना चाहिए जितनी उनकी शख्सियत है. तो हमने इसमें काफी कई घंटे रिसर्च करी, कई किताबें निकाली. From the looms of Ayodhya Dham, Manish Tripathi, like a spiritual weaver, stitched together Ramlala's divine garments. The entire outfit, it's all gold and silver. So even the fabric which is being used is pitambar, an authentic pitambar fabric which has silver and gold in it. And the embroidery also, the embroidery material is all silver and gold. Banarsi fabric in hues that resonate with the sacred. A yellow dhoti symbolizing the radiance of eternal knowledge. And a red patka reminiscent of the flame of devotion. Embellished with pure gold zari and threads, the auspicious symbols of Vaishnav tradition, Shankh, Padma, Chakra and Mayur glisten. Every thread, every ornament converge into the celestial symphony in the Garbhagriha of the Ram Temple in Ayodhya. Bureau Report, India Today. And Principal Secretary to the Government of Andhra Pradesh speaks to India Today on the state's education model at the India Today Education Summit in Tirupati. Listen in. Andhra and Telangana has the distinct reputation of sending most students to the United States for studies. So is the government looking, sir, to kind of boost children and ensure that they're better prepared, better equipped to go to the United States and study? Or are you looking at bettering the infrastructure here so that most students say, hey, let me not go to America, let me stay in Andhra, in my hometown or in my city and study? See, the way our policy, and this we keep discussing in our review meetings also with our Chief Minister, and he constantly talks about this issue. Let's build their capacity and let the final choice be left to the student. We should respect
the decision of the students. We should respect the decision of the parents and students together. What's also important in the sector like education is, as you've mentioned, using the kind of tools that you have available, using technology. And a big aspect of that, the buzzword going into 2024 has been AI, artificial intelligence. And I understand that AI also has played a big role in education in Andhra Pradesh. Can you explain how exactly to us? We gave this personalized device from the class 8 onwards to every student. And personalized device means a student has access to all that e-content 24/7. And then the content which we took was, which everybody, if you ask every second or third student in this country, the best in the country, the Byju's content. I mean, we are thankful to Mr. Byju's for providing this content to us. And you see, and you know this generative AI. Generative AI is, I can do a conversation. See, if you search through any other search tool like Google and all, it will just list out 1 lakh pages, 2 lakh pages, 3 lakh pages. But these generative AI will have a conversation as if I'm having a conversation with a human being. We have 4 lakh, around 4 lakh students in every class. So all 4 lakh students in class 9th, all 4 lakh students in class 8th. So we started this from last year, so 2 years over. So these 8 lakh students have this AI tutor. They have a tutor. They have a friend with them. They have a tuition teacher. You have a tuition teacher in the evening.